अगेन फॉर दिस सेशन। आज के सेशन में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। प्रोज सेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसको देखिए। Which is believed to be the earliest long prose in English? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्लेस मार्टेडी आर्थर, थॉर्टन्स का मॉर्टेड आर्थर, रोजर आचिन द स्कूल मास्टर और हॉलिंशेड्स का क्रॉनिकल्स, इनमें से कौन सा है जो सबसे पहला लॉन्ग प्रोज वर्क कहा जाता है इंग्लिश में? तो वो है बेटा फर्स्ट, यानी मेलोरीज मार्टेडी आर्थर द बिगेस्ट प्रोज वर्क। क्लियर? ये बड़े ध्यान से करना है बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वाज फर्स्ट रिलेटेड इन प्रोज बाय। द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स, जो आर्थर थे और उसके जो सैनिक थे, यानी उसके जो नाइट्स थे, of the round table was first related in prose by so Tennyson in his Idylls of the King, Malory in his Mortady Arthur, Thornton in his Mortady Arthur, Hollins in his Chronicles of England, Scotland and Ireland। कौन थे बेटा? तो आंसर है Malory, Malory in his Mortady Arthur, that should be the answer। Next is What is the central theme of Lemon's Brute? Lemon's Brute जो वर्क है उनका सेंट्रल थीम क्या है? ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंग्लैंड, विक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, डायनेस्टी ऑफ इंग्लिश मोनार्क। क्या है इनका जो है सेंट्रल थीम? आंसर शुड बी बेटा थर्ड ऑप्शन, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, डायनेस्टी ऑफ इंग्लिश मोनार्क। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वन। Wycliffe's Bible is translation of, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, और टीजीटी एग्जाम एंड पीजीटी एग्जाम, ठीक है। तो Wycliffe's की जो बाइबल है इज अ ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक टेक्स्ट, लैटिन टेक्स्ट, अब्यू टेक्स्ट, एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट। कौन सी टेक्स्ट को इन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया है वो बताना है। दैट आंसर इज अ लैटिन टेक्स्ट, लैटिन टेक्स्ट को इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड जॉन विक्लिफ रेंडर द बाइबल इनटू इंग्लिश? कौन से ईयर में विक्लिफ ने लैटिन से इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया है बेटा? बाइबल को ट्रांसलेट किया है तो कौन से ईयर में किया है ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर शुड बी 1380 में। Next is which of the following is the earliest version of the Bible? बाइबल का सबसे अर्लीस्ट वर्जन कौन सा है? विलियम टेलनेट्स इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट, माइल्स कवर्डेल्स इंग्लिश बाइबल, क्रोमवेल्स ग्रेट बाइबल, किंग जेम्स ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। सबसे अर्ली, सबसे पहला बाइबल का वर्जन कौन सा है बेटा? तो आंसर है फर्स्ट बेटा, विलियम टेलनेट्स का इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट, इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ नोवम ऑर्गनम? ये एक इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है बेटा। तो इसके ऑथर कौन है? बैकन, बेन जॉनसन, मेलोरी, रैफेल, ऑलिंस्ट। द आंसर इज बैकन, फ्रांसिस बैकन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ लेलिजी मेडिसी? Religi Medici also the important work, important work। इसके ऑथर कौन है? मिल्टन, ड्राइडन, सर थॉमस ब्राउने, थॉमस हॉब्स। The answer is थॉमस ब्राउने, the writer of the Religi Medici। What was the central theme of Milton's Armopagasia? थीम क्या है? The question is the option to defend people's freedom of speech।
लोगों को डिफेंड करना उनका थीम था बेटा। नेक्स्ट इज मिल्टन डिराइव द टाइटल फॉर हिज एरोपैगिटिया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपैगस, हु और व्हाट वाज एरोपैगस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड इज रियोपैगस, द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी मिल्टन ने ड्राइव किया था। तो आंसर है थर्ड बेटा, अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हेल्ड। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मिल्टन ने लिबर्टी ऑफ स्पीच पर कुछ प्रोज वर्क लिखे थे। प्रोज वर्क, राइटिंग डाउन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ थॉमस ब्राउन इज हाइड्रोट्रॉफिया। हाइड्रोट्रॉफिया सेंट्रल थीम क्या है? डिफरेंट मेथड्स हाउ द ओल्ड पीपल वर मेंटेन्ड इन एंशिएंट टाइम्स, डिफरेंट मेथड हाउ द पेशेंट्स वर ट्रीटेड, डिफरेंट मेथड्स हाउ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ, डिफरेंट रिचुअल्स ऑब्जर्व इन द पास्ट। तो थॉमस ब्राउन का हाइड्रोट्रॉफिया का सेंट्रल थीम क्या है? The answer should be C option, different method how the dead bodies were disposed of. ये उनका सेंट्रल थीम था बेटा। नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऑथर कौन है? जॉन टिलस्टन, जॉन एवलन, जॉन लॉकी, सैमुअल पेप्स। द आंसर शुड बी जॉन लॉकी। What is the literal meaning of Sater Risater? Sater Risatus, the little given by Carles to one of his, Thomas Carles, full name, Thomas Carles, to one of his greatest treatises in prose. Literal meaning क्या है? The philosophy of rethinking on political matters, the philosophy of clothes, the philosophy of the system of education, the philosophy of reawakening. किस चीज पर जोर दिया है? तो आंसर है बेटा सेकंड, द फिलॉसफी ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट इज चॉसर डेडिकेटेड हिज ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल टू हिज सन लिविस, हिज वाइफ फिलिपिया, हिज फेलो पोएट लैंगलैंड, किंग पिचार्ड। द आंसर इज फर्स्ट, हिज सन लेविस। Samuel Pepys' diaries was written in coded language. When was it disfigured? The answer should be 1825. Next is who is the author of Mr. Badman? Mr. Badman के author कौन है बेटा? Samuel Butler, Jeremy Taylor, John Bunyan, John Locke। कौन है? आंसर है John Bunyan। Who called the 18th century the age of prose and reason? किसने 18th century को age of prose and reason कहा है? That is very important question. आनंद ने, जॉनसन ने, कॉलरिज ने, हैजल्ट ने, किसने बोला है बेटा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आंसर है फर्स्ट, मैथ्यू आर्नल्ड। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। Who is the author of the Decline and the Fall of Roman Empire? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, The Decline and the Fall of Roman Empire। किसने बोला है? कौन इसका ऑथर है? तो एडमंड गिब्बन, एडमंड ब्रुक, एडमंड रॉबर्टसन, विलियम गॉडविन। कौन है? फर्स्ट, एडमंड गिब्बन। नेक्स्ट इज व्हाट इज रस्किन्स unto this last, his last philosophical book, his last collection of essays, his last book of criticism, his last political treatise? The answer is second, collection of essays। ऐसे राइटर्स थे, वैसे भी ये, तो इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज who is the author of Inquiry Concerning Political Justice? Inquiry Concerning Political Justice, इसके ऑथर कौन है? गिब्बन, बर्क, गॉडविन, पेन। विलियम गॉडविन। Next is who is the author of Sartor Resartus? Ruskin, Walter Peter, Carle, Edmund Burke। Yes, Carle, Thomas Carle,
थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ था बेटा। Who is the author of Portrait of the Artist as a Young Man? Portrait of the Artist as a Young Man, इसके राइटर कौन है? F.R. Lewis, T.S. Eliot, James Joyce, Ruskin. The answer should be James Joyce. James Joyce इनके राइटर हैं बेटा। चलिए 23 क्वेश्चन को देखिए बेटा, ध्यान से पढ़िए। In Ruskin's books, Syname and Lilies, what do the lilies symbolize? What do the lilies symbolize? Beauty of nature, purity and innocence of women, flowers of knowledge, wisdom contained. The answer should be second beta. Purity and innocence of women. इनकी lilies Syname and lilies जो बोला है, lilies symbolize the women. What is the central theme of Ruskin's Syname and Lilies? Syname and Lilies का name क्या है? Wealth in the king's treasures, wealth of wisdom contained in the books, wealth of experience in life, wealth of contentment in life. Wisdom contained in the books, wisdom contained. Second, answer should be second. Next one. Who is the author of Two Cheers for Democracy? Two Cheers for Democracy के author कौन है? And does today imposter Rudyard Kipling, Oscar Wilde? जल्दी से चेक करो बेटा। Question number 25. The answer should be second, E.M. Forster. Next is, who is the author of Confession of an English Opium Eater? Confession of an English Opium Eater. William Hazlitt, Thomas Law Peacock, Thomas De Quincey, Charles Lamb. 26. The answer should be C. Thomas De Quincey ने लिखा था Confession of an English Opium Eater. Who is the author of Human Bondage? Great work, Human Bondage. Great work. इसे हम ये भी कह सकते हैं ग्रेट वर्क ऑफ पर्सनल लिगेसी, पर्सनल लिगेसी इसका अदर नेम है बेटा ये। तो जेबी पर्सले, सॉम्ब्रेस्ट मॉन, हराल्ड पिंटर, सी.डी. लिविस। आंसर इज सेकेंड, सोमरसेट मॉर्गन। मैथ्यू आर्नल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद, कल्चर और एनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड्स की, वो किस चीज से डील करते हैं? रिलीजन से, थियोलॉजी से, एथिका से, सिविलाइजेशन से? आंसर इज एथिका, एथिक्स होते हैं बेटा उसके अंदर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ आर्नल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा? बेसिक थीम, आर्नल्ड्स का जो लिटरेचर एंड डॉगमा है उसका बेसिक थीम क्या है बेटा? कंटेम्परेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, थियोलॉजी है, विक्टोरियन सोशल वैल्यूज है, आर्ट एंड लिटरेचर है। The answer is theology. What is the basic theme of Swift's The Battle of the Books? जोनाथन स्विफ्ट जो थे उनका बैटल ऑफ द बुक्स का जो बेसिक थीम है वो क्या है? A comparative study of modern and ancient poets, competitive spirit amongst Augustan authors, humor and satire on contemporary authors, competition amongst literary critics. इनका थीम क्या था बैटल ऑफ द बुक्स में? A comparative study of modern and ancient poets. Who is the opium eater? यहां पर opium eater है, थोड़ा गलत हो गया बेटा, मिसप्रिंट है। Opium eater in De Quincey's Confession of an English Opium Eater. ये क्वेश्चन आना था तो आंसर है कॉलरिज। 31. या डी क्विंसी, कॉलरिज, डी क्विंसी हिमसेल्फ बेटा, ये आंसर है इसका, ये नहीं है। हालांकि कॉलरिज भी ओपियम ईटर थे पर डी क्विंसी हिमसेल्फ थे, ठीक है, इस मॉक के अंदर। चलिए नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप? हीरोज एंड हीरो वर्शिप के ऑथर कौन है? अब्राहम कावले, बर्ग, गिब्बन एंड कार्ले।
The answer is Thomas Carlyle. Next is, who is the author of Worthies of England? ये भी important work है बेटा. Worthies of England. Important है ये. Germany Taylor, John Locke, Thomas Fuller, Abraham Cowley. Thomas Fuller is the author of Worthies of England. Who is the author of the New Atlantis? The New Atlantis का author कौन है? Milton, Browning, Burton, Francis Bacon. Francis Bacon. Very good. Next is, who is the author of Imaginary Conversation? जल्दी से देखो बेटा. Imaginary Conversation के author कौन है? तो Savage Glander, William Godwin, Thomas Carlyle, Edmund Burke. Savage Glander. Next is, who defines the essay as loose celli of the mind? Loose celli of mind. Commented on essay. तो इसको देखिए कौन है. सी ऑफ डॉक्टर जॉनसन. Who is believed to be the father of the essay? Father of essay कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है. Plato, Aristotle, Montaigne और Horace. Montaigne, father of English essay. Who is the most important writer of aphoristic essay in English? Aphoristic essay in English. Ben Jonson, Bacon, Thomas Browne, Sidney. The answer is Francis Bacon. Next is, Bacon's essays are modeled on the essays of Plato, Montaigne, Aristotle, Raphael Hollinst. Montaigne. ये कह सकते हैं influenced. Next is, how many essays were there in Bacon's third and last edition of essays published in 1625? कितने ऐसे हैं बैकन्स के जो थर्ड और लास्ट एडिशन ऐसे में पब्लिश हुए 25 में? टोटल ऐसे कितने हैं? 40. आंसर इज 58 essays बेटा. Who is the author of a collection of essays published under the title of Discoveries? Discoveries टाइटल के अंदर कितने ऐसे? Who is the author of a collection of essays? Collection of essays बनाया, कौन ऑथर थे? इनका नाम था डिस्कवरीज. मेन उस कलेक्शन का डेकर थे, हॉल थे, जॉनसन थे, ओवरबरी थे. तो बेन जॉनसन. Next is, an author has drawn some character sketches under the title Balmains of London. What is this author? Who is this? Who is this author? Who is? Thomas Overbury, Abraham Cowley, Joseph Hall, Thomas Dekker. Thomas Dekker. That is very, very important, beta. Next question. There's a mixture of falsehood like alloy in coins of gold and silver, which may make the metal work better, but it emphasizes it. In which essay of Bacon do these lines occur? The second, of truth. Of truth. A place with the man and with some to the better and some to the worse. In which essay of Bacon do these lines occur? Of great place. Of great place. Milton wrote a large number of political pamphlets and short write-ups. What were they called? A new track observation treatises. Track. These are called the
track. Next is, who brought out the journal called the Tatler? The Tatler. The Tatler. रिचार्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, डॉक्टर जॉनसन. किसने किया? 46. रिचार्ड स्टील. द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर इन्होंने लिखा था बेटा. What was the name of the periodical brought out by Daniel Defoe? Daniel Defoe ने जो periodical brought लिखा था उसका नाम क्या था? The Review, The Adler, The Morning News, The Observer. First, The Review. Next is, Edison and Steele jointly brought out a journal. What was its name? The Tatler, The Spectator, The Idler, The Rambler. I think The Spectator. What is it? The Spectator. बिल्कुल सही. Next is, who brought out the journal named The Idler? Edison, Richard Steele, Dr. Johnson, Oliver Goldsmith. Dr. Johnson. Last one for today. Those essays and articles are known as coverless papers. Joseph Edison. So these are some important 50 questions related to the prose and essay works by the writers in English literature. ये एक बार दोबारा से आप लोग रीड करेंगे बेटा. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे या पूछेंगे मेरे से, ठीक है. और रिमेनिंग इनकी प्रोज वर्क्स के कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एक ही दिन में, ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन आराम से पढ़ना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाता हूं मैं बार बार. सेशन वाइज, जैसे कि मैंने आपको कमेंट किया हुआ है कि सेशन वाइज हम लोग 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर डिस्कस करेंगे. वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं. तो बाकी के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रोज से रिलेटेड, प्रोज एंड लेटर्स से रिलेटेड, ठीक है. और उसके बाद आगे रहेगा हमारा कुछ अपकमिंग कंटेंट, वो रहेगा नॉवेल्स, नॉवलिस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉवेल्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं बेटा. चलिए, थैंक यू फॉर टुडे.